हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है यूएस मीडिया ऑन ऋषि सोनक द न्यू ब्रिटिश पीएम। अब इसमें देखते हैं कि क्या रेसिज्म हुआ इन ब्रिटेन, यूके पॉलिटिक्स। देखते हैं मिस्टर नोवा क्या बोलते हैं। वो खुद पर्सन ऑफ कलर हैं तो वो क्या बोलते हैं, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। हमारे दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन दो चैनल्स में भी आ रहे हैं। चैनल्स के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि मैं सोचा था यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी होती है पर्सन ऑफ कलर, पर्सन मतलब जिस इंसान में कलर है, मतलब रंगीला आदमी। ये दो पर्सन ऑफ कलर है वहाँ पे। एक रंगीला वो भी होता है जो मस्त मौला हो, मजे करता हो, रंगीला पर्सन ऑफ कलर जिनमें कलर है। मैं तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज सब हूँ। तो चलो शुरू करें। Great Britain. Last week, Liz Truss announced after just 44 days in office, she would be stepping down as Prime Minister so she could move on to becoming that person who everyone recognizes but they can't quite remember from where. Like, did we go to high school? Oh, you were the Prime Minister! Oh, so sorry about that. Anyway, can I have 2 large popcorns, please? And, Anyway, Liz Truss is gone. And it looks like the UK's got a brand new man. We begin in the United Kingdom, which is about to get its 3rd Prime Minister in less than 2 months. Just a short time ago, the ruling Conservative Party announced that former Finance Minister Rishi Sunak won the race to become Party Leader and Prime Minister. Rishi Sunak will become this country's first ever Prime Minister of colour, first ever Asian Prime Minister and first ever Hindu Prime Minister. Rishi Sunak, not only the first person of colour to walk through 10 Downing, also the youngest Prime Minister here in about 2 centuries. Really a historic day. A former investment banker, he and his wife are reported to be among the country's richest people. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. Yeah, that's right. The UK's new Prime Minister is former Finance Minister Rishi Sunak. And he's Indian, he's Hindu, and he's only 42 years old, which means he will probably serve well into his 42 and a halves. Easily. And let's not forget another important first. He's also the first Prime Minister who's an absolute snack. Yeah. Oh, look at you, Rishi. And before you're thinking, oh, is he? Don't forget who came before. Don't forget. We're moving on up. Now, of course, not everyone in the UK is happy about Rishi Sunak taking the top spot and making history. And it's not because of his policies or because of his personality. No, there are some people who have a problem with something else, as this caller to a British radio show so eloquently explained. Ooh. Is the real problem here, Jerry, that Rishi Sunak is a brown man and you don't trust him at the top of this country? Well, could you imagine him going to the Scottish Nationalists and being the Prime Minister of the Scottish Nationalists? Could you imagine me becoming the Prime Minister of Pakistan or Saudi Arabia? No, these things matter. I'm sorry you don't like it, but this is predominantly, we're talking about England, right? 85% of the English people, yes, are white English people, and they want to see a Prime Minister that reflects them. Yeah, this guy has a good point. Can you imagine if white English people wanted to rule countries where no one looked like them? Oh, that would never happen. Can you imagine that world? India example है। वो ना आगा तो ठीक है। Good one. Now, you know what's so funny to me? It's funny how racists always say, oh, colonization was fine. It was business. Until they feel like they're being colonized. Then all of a sudden it's like, something needs to be done. Something needs to be done. You're not even being colonized. The guy is British. What's wrong with you? You know, if you ask me, British racists are looking at this whole thing all wrong. This could be a good thing for you people. After 400 years, you'll finally get to legitimately blame a brown person for your country's problems. You're living your dreams! Wake up! I mean, there is a part of me. There's a part of me that feels a little bad for England's racists. Yeah. No, because remember, they voted for Brexit specifically to keep Britain white.
And that vote started a 7-year chain of dominoes that has now led directly to an Indian Prime Minister. Oh, man. Yeah, they're probably like, oh, this is certainly a rich irony at my expense, isn't it? Yeah. And here's the thing, keep in mind, this caller even says that he is Tory. So this is the same party as Rishi Sunak, right? Which means they probably agree on all the same policies. He just doesn't like that he's not white, which I don't understand. I truly don't understand. What are you scared of? Huh? What is this caller scared of? Does he think Sunak is going to walk up to the podium on his first day in office and be like, it is the greatest privilege of my life to be able to give back to the country I owe so much to, and to show my gratitude, I just want to say, I'm selling the entire country to India! Revenge time, you bastards! This was the plan the whole time! Happy Diwali, mother bitches! It's not going to happen, you racists! Alright, that's it for the headlines. यार बड़े मजेदार था. It was just fantastic. क्या कैच किया और किस वे से, मतलब बात को टर्न करके उसको एक कॉमेडी मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका से हैं. अच्छा, कमाल का था. एक से एक मजेदार बात की और एंडिंग वाज फैंटास्टिक. कि तुमको किस बात का डर है? कि उसने कहा था कि भैया मेरा प्लान जो था पहले से, बहुत पहले से मैंने ये सोच के रखा था कि मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी कंट्री को बेच दूंगा, इंडिया को बेच दूंगा. ये लास्ट में जो एक्सेंट चेंज किया था, और एक्सेंट भी वैसे, तुम्हें क्या लगता है कि वो बोल रहा है कि मैं बेच दूंगा अपनी कंट्री ना? बहुत अच्छा क्रिटिक किया है. और स्पेशली वो जो कॉलर है उसका वीडियो वायरल हुआ है. अच्छा, मैंने सुना नहीं था उनका, मतलब लोगों ने बोल के बताया था, एग्जैक्टली नहीं सुना था. लोगों ने उस पर मतलब अपनी कमेंटरी दी थी, कि कमेंटरी यही दी थी कि वो कह रहा है कि 85% वाइट्स हैं तो वाइट होना चाहिए, और वो उसकी पॉइंट थी. नहीं, इनका भी रीजन कितना अच्छा था. उन्होंने कहा कि अच्छा कि तुम्हारी कंट्री में इतने वाइट्स हैं तो इसलिए वाइट होना चाहिए. जो तुम गए थे, मतलब इनडायरेक्टली मैं तो यही कहूंगी, इंडिया गए थे, क्या वहां पे तुम्हें वाइट्स दिखे थे जो तुम जाके बैठ गए थे? वही तो क्वेश्चन वही था कि तुम जो हो दुनिया भर में गए थे, तुमने कैसे रूल किया उनके ऊपर? तो ठीक है, आयरनी सभी लोग कर रहे हैं और सभी को पता है कि पर्सन ऑफ कलर का सारा पंगा है हर जगह पे. वो तो है. अब मगर ये भी नजर आ रहा है कि जब आप में एबिलिटी होती है और आपके सामने कोई खड़ा नहीं होता, तो अपने आप को बचाने के लिए हर कोई एग्री करते हैं यस कि यही बंदा जो है हमारे देश को बचाएगा. सिंपल है. आपको नजर आ रहे हैं वो जो है मोनार्की से डबल हैं अमीर, और साथ में जैसे कह रहे हैं ब्राउन की बात कर रहे हैं. पर्सन ऑफ कलर थोड़ा बेटर वर्ड था, बट रंगीले और भी बेटर है. मगर नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि प्रॉब्लम तो उन लोगों को आ रही है, मजबूरी में किया है. मगर उनकी आंखें खुलेंगी. सबकी बात नहीं कर रहा मैं, बुरे लोगों की बात कर रहा हूँ. अल्टीमेटली जब इकॉनमी बेटर होगी, पाउंड इम्प्रूव होगा, सब कुछ, तब उनको समझ आएगा कि बॉस आप जो है रंग से आगे ऑब्जेक्टिवली देखो. गलत तरीके से, अगर तुम गलत तरीके देख रहे हो तो तुम्हारे ही एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है. अपने एजुकेशन सिस्टम को पहले ठीक करो. बिल्कुल, जो अमेरिका ने ठीक कर दिया है होपफुली. यस, पर मजेदार था जिस तरह से इन्होंने हर चीज में रोस्ट किया, हर को रोस्ट किया. इवन ऋषि सुनक को रोस्ट किया कि भैया ये इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, अभी 42 है, तो हो सकता है उन्होंने इनडायरेक्टली जो बोला था कि भैया 42.5 तक ये रह ले. कि आसान काम नहीं होगा. आसान काम नहीं है. जितना जब लोग अंदर से दुखी हैं, मजबूरी में बनाया है, और प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट करी जाएंगी. बट अगर वो अच्छा काम कर दे, अपना जो ड्यूटी है वो फुलफिल कर दे और इकोनॉमी ठीक कर देंगे, तो ये सब जो हेटर्स है इनके भगवान करे अकल थोड़ी आ जाए कि रंग कलर को देखने की जगह ये देखो कि वो एक ब्रिटिशर है. अगर आपको अपनी कंट्री में बेस्ट बंदा चाहिए तो यही करना पड़ेगा. मजा आया. यूएस में मिस्टर बराक ओबामा आए थे. दैट्स हाउ इट इज. आई होप दे आर लर्निंग, बट देखते हैं. बिल्कुल, मजा बहुत अच्छा किया था. मतलब इनका जो होता है ना, कहाँ से कहाँ कॉमेडी लाके और एक मैसेज भी अच्छा देते हैं, वो इज अमेजिंग. कॉमेडी भी थी पर उसमें आपको सोचने को मजबूर भी कर रहे थे. जो इनर चीज, जो अंदर की बात है, वो बताई भी है. मजेदार था, मजा आ गया. तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.